Hello guys, again to my another vlog guys. Today it will be a short vlog once again like yesterday, and today I'm planning to do a small experiment, like how much can a washing machine like clean the dirt. Like suppose your clothes is dirty, like here I've got my hanky here. It's already like I have not washed so long way ago, so it's already like from white to it almost become brown. So I want to see how much can a washing machine clean dirty clothes. So I always have a guess again, like we used to do with our hand. Like sometimes we used to brush and it used to go the dirt, the mug, the spot and all. But washing machine, it does not happen like how we used to brush and all. Sometimes I used to have a doubt, how much can a washing machine clean? So today I'll be doing a small experiment here at ICFA University Hostel. We have got a washing machine here. So I thought of making a small experiment with you. So guys, I'll show you guys today that I'll try to like do small experiment and prove how much it did. So this is something I don't know did it really clean or not. Because most of the time I wash clothes like a thick cloth which it is very difficult to wash with hand. So today I'll be doing this small like dirty handkerchief and we'll see how much can it clean. Chalo, washing machine is like we cannot wash with a single one at hostel, so it will be a waste because we always have to do a signature there, and I think maybe extra money or something, maybe something, I don't know what for reason they have done registration there. So along with my hanky, this pile of clothes I'll be washing. So let's see how much can a washing machine clean the handkerchief. Let's prove it guys. See here, I've got a bucket and I'll put it inside oh, so here is the main one, this hanky. Let's see how much can it clean this one. Chalo. We need surf or any like these things to clean it. Then for the good smell we need this, what do we call this? Conditioner, fabric conditioner, or we call it in a short form comfort. टाइम दिखता है ये 9 मिनट हो चुका है अभी, 9 मिनट बाकी है और अंदर में मशीन चल रहा है सर, ग्राइंडिंग टाइम। अभी फिर से वो पानी का आवाज़ आ रहा है तो पानी फिल कर रहा होगा, फिर से घूम रहा है। अभी इधर भी आ गया ना वॉशिंग मशीन की जगह पे, तो अभी वेट कर रहा है, 9 मिनट और दिखा रहा है, तो देखते प्रूफ कर पाएगा कि नहीं। ये वॉशिंग मशीन का पावर दिखाते हैं भाई। अभी रेडी हो गया, देखो हमारा रुमाल ही कहाँ चला गया रे। Oh shit, here we go again. चलो इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर में वो ड्राई करने का जगह है ना, तो स्टेप को चढ़ना पड़ेगा। ये है हमारा हॉस्टल का ड्राइंग सेक्शन, और उधर पे मेरा कपड़ा भी ड्राई करेगा ना तो देखेगा कितना सफाई हुआ है। चलो तो देखो ये है वो रिजल्ट आ गया है, देखो मेरा रुमाल का क्या हालत हो रहा है। चलो मैं तो इधर का बोर्ड यूज़ करता है तो ना, इधर का बोर्ड गंदा है, ऊपर के यूज़ ही नहीं किया तो ऊपर का तो वाइट हो गया साला। वॉशिंग मशीन ने तो थोड़ा क्लीन किया है पर इतना नहीं हुआ है ना, तो हाथ से ही नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट क्लॉथ ऐसा वगैरह को हाथ से धो लो, और जो क्लॉथ ऐसा होता है ना थोड़ा थिक वगैरह, वो बेस्ट है वो वॉशिंग मशीन के लिए, ऐसा वगैरह। तो कपड़ा भी ड्राई कर लिया है, सिर्फ हमको ना वो ये हैंकरचिप का वो रिजल्ट देखना था यार। थोड़ा तो हुआ है क्लीन, पर और थोड़ा बाकी है ना।
सारा ऊपर का और नीचे का सेक्शन का तो अलग से ही है। तो कोई बात नहीं भाई, कपड़ा तो धो लिया है। तो अभी देख सकते हैं ना, आज का व्लॉग इधर भी ख़त्म करते हैं।